तो +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश रो ऑन एग्जामिनेशंस किसी 1 मार्क्स क्वेश्चन आप डिस्कसन करी जहाँ को विंस्टन चर्चिल लिखिले और जीवन किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्कूल कि पढ़ते तापर से कि आर्मी से जॉइन हेले से सबरे से निजर किसी ऑटोबायोग्राफी जेहेतु तो सब निजर जीवन एक्सपीरियंस शेयर कर पाठे बहुत भल अच्छी तो मुझे किसी 1 मार्क्स क्वेश्चन आप डिस्कसन करी आउ वीडियो आगे मुझे कहि आप यार पीडीएफ टी को पाइपर तो चलते स्टार्ट करवा who is the writer of the topic on examinations writer कितने ना विंस्टन एस चर्चिल यार लेखा होते नेक्स्ट देखा who was the विंस्टन एस चर्चिल कि ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रो से प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ऑन एग्जामिनेशंस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कहार माने ऑन एग्जामिनेशन कहार ऑटोबायोग्राफी ना विंस्टन चर्चिल को ऑटोबायोग्राफी ऑन एग्जामिनेशंस ऑटोबायोग्राफी मीन्स कौन ना राइटिंग अबाउट वन लाइफ हूँ ऑटोबायोग्राफी मैंने हम कहले बुझे निज विषय लिखा ऑटोबायोग्राफी कहुए आदि आउ किए निज मन तुम जी पढ़ु जी शुणुची मन ता विषय जब सी निजे लिखुची ताहले सीधा ऑटोबायोग्राफी किंतु ता कहानी शुणी आउ जन किए लिखिले ताहाको बायोग्राफी कहुए examinations for many are not a or an test not pleasant experience who enter into the inhospitable regions of examination now Winston Churchill who had scarcely passed in 12th birthday when he entered the inhospitable regions on examination now Winston Churchill से कौन करना स्केसली पास करते इन हिज 12th birthday मैंने 12 वर्ष पर when he entered the inhospitable regions to examinations what is inhospitable तो inhospitable माने कौन ना अनफ्रेंडली एंड डिसलाइकिंग इनहॉस्पिटल माने अनफ्रेंडली माने निजर फ्रेंडली और डिसलाइक माने पसंद न व्हाट वाज ए ग्रेट ट्रायल टू द राइटर एग्जामिनेशंस माने कौन लेखक पे गोटे ग्रेट ट्रायल कौन परीक्षा कौन थिला ना एग्जामिनेशन परीक्षा और ग्रेट ट्रायल थिला द सब्जेक्ट्स व्हिच वेर ओल्डेस्ट डियरेस्ट माने पसंद टू द एग्जामिनेशंस व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन डियरेस्ट माने कौन लाइकिंग एंड फैमिलियर जो एग्जामिनेशन जो करते से पसंद आ फैमिलियर सब्जेक्ट थिला डियरेस्ट आम अर्थ आम यह बुझा व्हिच सब्जेक्ट्स वेर डियरेस्ट टू द एग्जामिनेशन गोटे सब्जेक्ट को मैंने पसंद थिला डियरेस्ट मैंने बुझे लाइकिंग आउ फैमिलियर थिला ना लाटिन एंड मैथ एग्जामिनर्स मैंने परीक्षकों से गोटे भल सब्जेक्ट थिला पसंद लगुला द एग्जामिनर्स ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट द राइटर द एग्जामिनर्स मैंने राइटर को कौन सब पसंद डिड नॉट नो जहाँ पचार से जान कहुई हु सट टू एक्सपोज द इग्नोरेंस ऑफ द राइटर द एग्जामिनर्स मैंने कौन ना द हु सट मैंने एग्जाम सट टू एक्सपोज मैंने से कौन ना जो राइटर थे विंस्टन चर्चिल से जहाँ जान ना एग्जामिनेशन ताहा से विषय पचार यहाँ गोटे से कहते और नेक्स्ट देखा the writer did not do all win the Harrow entrance examinations next देखा who was the headmaster of Harrow school रे headmaster थिले ना डॉक्टर वेल्डन से कौन से हेरो स्कूल रो हेडमास्टर थिले The writer was unable to answer a single question in the Latin paper. Writer बोले जो Latin paper थिला तार गोटे सिंगल आंसर मत लिखिया समर्थन थिले. There were blots and smarts on desk ना आंसर पेपर तांको लुह आउ थिरा ते कि नथला लिखिया कि चाहन कोन करिए सर. There were blots and smarts on answer paper of Spencer Churchill for contents. Blots and smarts means कौन ना stains and spots. Mereful ushers means कौन attends with the complaints. Dr. Weldon was a man capable of looking this मैंने कौन Dr. Weldon से गोटे मनुष्य जहाँ को से कौन लुकिंग करते ना beneath the surface of things. शिक्षण जिनस दक्षता कहा केते कौन अच्छी से मैंने देखिक जानी पार्थिले जे ए पिलाटा प्रकृति कौन कर पारिबो.
looking beneath the surface of things. What does the underlying sentence means? माने कौन analyze deeply माने कौन looking beneath माने भितर कौन अच्छी surface of thinking surface कौन अच्छी यार अर्थ है analyze thinking माने deeply भावे से read कर पाते जे कहाँ दक्षता केते कौन अच्छी आउ डॉक्टर वेल्डन मध्य विंस्टन एट सर्जन दक्षता देखी बिना परीक्षा स्कूल रे जॉइन देते जहाँद्वारा कि से आगे सब बढ़ी पारे। नेक्स्ट देखा ए मैन नॉट डिपेंड अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस। व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स ना नॉट डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स इन एग्जाम माने एग्जाम जो आंसर स्क्रिप्ट से परफॉर्मेंसटा विषय कहूनी छाड़ी केते कौन जिन अच्छी जहाँ डॉक्टर वेल्डन डीपली एनालाइज कर द राइटर वाज प्लेस इन डेस्क डिविजन ना राइटर को प्लेस इन डिविजन रे प्लेस करा ना थर्ड डिविजन रे रखा जाता। द राइटर गॉट लोएस्ट डिविजन इन डेस्क फॉर्म ना फोर्थ फॉर्म। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वेर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना ए बी सी डी इन हिसाब से नाम को रखा जाता। द नेम ऑफ स्पेंसर चर्चिल बिगेन विथ लेटर्स एस। द राइटर्स पोजीशन इन द admission list was called 2 from the bottom of the school. The custom of calling the roll of Harrow different from the rate of Eton. At Eton school रे the boys stand in the desk while calling the roll ना clutcher माने group हिसाब से जाउथले। At Eton school the boys lays his head and with her names and called ना lift। नेक्स्ट देखिबा at Harrow school रे the boys this a while answering roll calls na feel past at a mast। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड रेनलॉप चर्चिल वाज डेस। लॉर्ड रेनलॉप चर्चिल किए थे ना फादर ऑफ स्पेंसर चर्चिल तो विंस्टन चर्चिल और स्पेंसर चर्चिल लॉर्ड रेनलॉप बापा थे। लॉर्ड रेनलॉप चर्चिल वाज ए डेस ना लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द चांसलर ऑफ द एजुकेशन से गोटे बड़ पोस्ट कि रेनलॉप चर्चिल Lord Ranelagh Churchill has resigned for the House of Commons and the Chancellor of the Exchequer in the 1857 they resigned. Lord Ranelagh Churchill worked in the footprint of politics तांकर सब कोन footprint थिला बहुत चिन्ह परिचय थिला। Large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps। what does the underline word means? both sexes माने कोन both male और female एटा हम बुझी परिबा। नेक्स्ट देखिबा Spencer became the last of the all because there's not two sets from the bottom left to the school। से मन दु जन तांको स्कूल कोन से कारण बाहर करले जन को से लास्ट जाउतले। Two of the boys from the bottom shelf left the school due to illness or some other causes। तो यही प्रकार से दुईटी पिला छात्र से कोन इटन स्कूल बाहर करथले। Who were passing irreverent comment to Spencer Churchill at the gate of Harrow School was why he is list of visitors। irreverent comment means कोन ना irreverent disrespectful remarks। I continued in the unpretentious situations for nearly a year। what does the underlying structure means? na modest situations। the clever boys at Harrow learned this Latin and Greek ମାନେ ଚତୁର ପିଲାମାନେ ଲାଟିନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ କୁ Harrow ସ୍କୁଲ ରେ ପଢୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା the writer was taught this ନା ରାଇଟର ସବୁ କଣ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବା ଲେଖୁଥିଲେ। Dunes are des na slow learners। Dunes माने जो कम स्लो पाठ पढ़ती। मिस्टर समरवेल वाज डेस समरवेल कौन इंग्लिश टीचर। मिस्टर समरवेल डेस ए मोस्ट डिलाइटफुल मैन। व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड्स मीन? मोस्ट डिलाइटफुल मैन मीन्स मैन गिविंग प्लेजर बहुत भल मनुष्य थे मिस्टर समरवेल। नेक्स्ट देखिबा टू हुम माय डेब्ट इज ग्रेट। व्हाट डज द अंडरलाइन पार्ट मीन? highly obliged and grateful to someone। Mr. Somerville was in charge of teaching this new stupid boys माने जो stupid खराब पिले तांको मानकर पढ़ा दायित्व मिस्टर समरवेल को ऊपर थिला। Mr. Somerville was in charge of teaching the stupid boys the most disregarded thing। what does the underline meaning mean? माने कोन disregarded thing माने
unimportant thing. English parsing means dividing a sentence into parts and describing about the grammar of each word and part. Mr. Somerville had a system of his own. What does the underline mean? One method of teaching technique. Somerville was using black, red, blue and green colored in ink to indicate different parts of a sentence. So Somerville कौन करले ना निजरो black, red, blue and green words सब निजे यूज करथिले. I got into my bones the essential structure of the underlined British sentence. What does the underline expression means? Underlined in log practically. Next देखिबा perfectly understood and learned perfectly. I got into my bones माने भल भाबे बुझिबा आ learn भल भाबे मते पढिबा. School fellows of Spencer won prizes and distinction for writing na Latin paper ଆଉ Pinthi epigrams. Pinthi means कौन ना short and brief माने छोटरे ଆଉ ताको विस्तार के लिखिबा. Epigram means कौन ना short and witty expressions. To learn their living means कौन to learn money for food, clothing, etc. To make their way means कौन to succeed in life. The writer would let the clever ones learn कौन Latin और Greek रे से पढ़ले. Greek was a treat means Greek was a special pleasure. The writer first went to Harrow in this term a summer term जाइले से writer. Next देखिबा. Mr. Somerville, a most delightful man. What does the underlined past means? A man giving pleasure. To whom my debt is great. What does the underlined part mean? A highly obliged and grateful to someone. Mr. Somerville was in charge of teaching stupid boys. Mr. Somerville was in charge of teaching the stupid boys. The most discreet thing. What does the underlined mean? Unimportant thing. तो यूनिट 3 रे हम देखिबा. The Harrow School was the best ना biggest swimming pool bath. Swimming bath माने कोन Harrow School रे ଗୋଟେ ବଡ଼ swimming bath थिला. The Harrow swimming bath was more like this na the bend of a river. The swimming bath of Harrow bed this bridges as na two bridges. Theater we used to repair for horse. What does the underline word means na there second. Repair for hours means days. Man kono go in large numbers. The margin of the swimming bath of the Harrow School was made of days na asset na picture road se swimming bath ta बुझला. Boys of my size means my height and health. I saw a boy stand in a meditative posture. Meditative posture माने कौन ना thoughtful and attentive position. इसको meditative posture कहा जाए. I taught him fair games. Fair games means कौन ना chess or attack. Chess or attack. I feel doubt in vain. Vain means कौन useless or unsuccessful. Swift as the wind, my posture outlook mean. Outlook mean caught and come upon suddenly. I soon scrambled out of the other side mean कौन मैं came out in also quickly also possible. You are the fought it. What does it mean? मैंने fought it मैंने कौन to get into trouble for something done. Emery in the days from. Emery 6th from. सबले पढ़ला. Emery is the days of his house. Emery is the head of his house. Emery is the days of gym. Gym रे कौन champion थिला. Emery is the champion at a gym. Next देखिबा. He has got his football colors. The underline he refers to. He माने कि एटा he माने Emery को refers करछि. I approach the potent in lively trepidation means कौन person who possess great power. I mistook you for a thought from boy mean mistook माने कौन ना wrongly identify somebody. He did not seem at all pleased by things mean माने कौन ना to make somebody feel less angry. He gave general remarks about my check. My check माने कौन talk or behavior.
preparation for an examination is very much painstaking. It means taking risk in one with great thoughtfulness. Next देखिबा children adopt many peculiar ways to face examination. Underline word means not normal. Emery was senior to Spencer Churchill by this 3 years. 3 years में कौन एमेरी सीनियर थिला स्पेंसर चर्चिल को ठारू. एमेरी एंड स्पेंसर बिकम कॉलेजेस कौन कैबिनेट थिले हु recited the 1200 lines of Macaulay Lay of एंशिएंट रोम ना स्पेंसर चर्चिल 1200 शब्द लाइन लिखिले मैकुलस ले हिसाब रे. नेक्स्ट देखिबा who succeed in passing the preliminary examination from the army रो जो preliminary examination by किए पास थिले ना स्पेंसर चर्चिल पास होथिले. What is dominion कौन terribly or of a government. What is Monte Carlo कौन a French too famous for gambling. गोटे फ्रेंच टाउन जहाँ की गेमिंग में फेमस अच्छी ताको मोंट कार्लो बोली कहुच्छी. एंड इन प्लेन ए कौन ना फ्रेंच वर्ड ये वर्ड अर्थ कौन ना प्लेस इंटायरली ए सिंगल नंबर. नेक्स्ट देखिबा I thought to have been paid 35 times my stake. Word means कौन इमोशनल इन्वेस्ट इन समथिंग. नेक्स्ट देखिबा द क्वेश्चन इन द आर्मी एंट्रांस वाज अबाउट द कौन द मैप ऑफ न्यूजीलैंड. जो क्वेश्चन आर्मी रो जो क्वेश्चन एंट्रांस एग्जाम थिला से को ऊपर क्वेश्चन पर ना मैप ऑफ न्यूजीलैंड रो मैप ऊपर से क्वेश्चन पचारथिला. तो एथिला मैं कौन ऑन एग्जामिनेशन रो किछि वन मार्क्स क्वेश्चन जते अपन पीडीएफ चाहते ताहले डिस्क्रिप्शन रा मोर टेलीग्राम लिंक अछि सेटा अपन जॉइन हंतु अपन मन कर पीडीएफ मिल जिवो. तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.